Assalamualaikum everyone. Sorry for the inconvenience, but I think we can start now. Yeah. So, welcome to the science reasoning and math reasoning orientation. तो जैसे कि आपको पता है कि 50% of AKU test consists of science reasoning and maths reasoning. ठीक है, 50% जो है वो आपका science subjects में आता है और जो बाकी 50% है वो वो रीजनिंग से आता है। ठीक है, तो इसलिए और आपको जैसे कि पता होगा कि रीजनिंग पोर्शन को अलग से पास करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, so so that's why talking about science reasoning and maths reasoning is very important. Or pre-med आपके लिए लाया है a course which will entirely focus on science reasoning and math reasoning. ठीक है, क्योंकि science subjects biology physics और chemistry के resources तो हैं, लेकिन science reasoning और maths reasoning के resources नहीं है, which is why pre-med provides you resources, provides you with questions, provides you with teachers जो कि आपकी help करते हैं throughout your preparation. uh, आपको साइंस रीजनिंग के सिंपल क्वेश्चंस देते हैं. सो विल टॉक अबाउट कि इस कोर्स में क्या होगा. ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन. ओके okay, so science and maths reasoning will be taught to you guys the AKU way. इसमें हम आपको रट्टा लगाना नहीं सिखाएंगे, बट रीजनिंग कैसे होती है. जैसे कि आपको पता है दिस इज साइंस रीजनिंग एंड मैथ्स रीजनिंग. ठीक है, तो व्हाट बेसिकली इज रीजनिंग. रीजनिंग कैसे करते हैं क्वेश्चंस में. साइंस और मैथ्स में रीजनिंग क्या होती है, ये सब आपको वो टीचर्स पढ़ाएंगे जिन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया है द टेस्ट, उन्होंने खुद दिया है, पास किया है, एंड दे हैव aced it, right? So those are your best guides available, right? There's no other platform that actually gives you access to this many resources, right? So PreMed has brought you the course, and I think this is a very good way to basically learn the science and maths reasoning the AKU way. ठीक है, तो AKU में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं वो समझाने के लिए आप we have brought this really, a big course, right? So stay tuned, guys, everyone. अच्छा, तो ये हमारे प्रीमेड के फाउंडर्स हैं, जैसे कि आपको पता है, हमसे हसनैन मनखानी और फहद न्याज शेख. और as you guys know, हसनैन मनखानी is a 5th year medical student at AKU. तो उन्होंने खुद AKU की टेस्ट दी है, पास की है, और he's studying there. He is in his last year. ठीक है, तो हसनैन मनखानी was basically उन्होंने अपनी टेस्ट एक दफा दी थी क्योंकि, लेकिन वो फेल हो गए थे. ही couldn't pass, लेकिन उन्होंने फिर नेक्स्ट ईयर ट्राई किया, and he basically, so then he aced the test, right? So one of the biggest challenges जो उन्होंने face किया था was in unavailability of the resources. ठीक है, कि AQ के लिए जो resources हैं वो available नहीं होते थे. ठीक है, there are some academies, लेकिन they're so expensive and they're just not available, accessible to everyone. ठीक है, and they're super super expensive. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, he had this idea to make an online accessible resource platform जो कि सबके लिए हो, जो जिसको सब एक्सेस कर पाए और जो easy to navigate हो, right? And so this is how
we had the idea for PreMed.PK. Okay, and as you know, PreMed.PK की जो website है, it's very negotiable, it's very easy to navigate, and it's very it's a good website for and it has like all the resources. ठीक है. um so AKU के लिए I think this is one of the very few platforms जहाँ पे AKU की तैयारी आप कर सकते हो with full access to everything जो कि AKU में आ सकता है. ठीक है, it does not leave off anything. ठीक है. So हसनैन मनखानी की जो help की थी वो फहद शेख ने की थी. ठीक है, and he was the visionary who actually made it all true, from coding the website and everything. So they both worked together. So Fahad Sheikh has graduated from Dow Medical College, and they both worked together in 2021, and they came up with this idea and brought it into execution. Or now this is like thriving platform. Okay? And I know like a lot of people who get into AKU, my juniors, my classmates, using this very platform. They took courses, they used the practice questions, the past papers, and everything. It's very feasible, very accessible, and very convenient, right? And I hope all of you would agree if you have used it ever. Okay, so we have amazing teachers that who will teach you maths reasoning and science reasoning, right? So the first one is Rumail. Rumail also passed his AQ test with 87% in maths and science reasoning. ठीक है, उनको उन्होंने 87% लिया था AQ की टेस्ट में, which is a huge deal. ठीक है, so he was able to pass it. ठीक है, he also has 716 SAT math. He had A star in his O level math. So you guys can tell that he is an expert in math, right? So अगर आपको रुमेल से पढ़ना है, who is I think who is a medical student right now, he aced the math reasoning in AKU, so he will be the best teacher you'll ever get, like honestly. So if you guys want to study from Rumail, you guys should sign up for this course. ठीक है, and I know he'll be an amazing teacher because इन्होंने हमारा एक प्रीमेड पे एक और कोर्स भी पढ़ाया है. So yeah, and जिन्होंने वो अटेंड किया है, they would know कि he's a good teacher. Okay, and then for science reasoning, we have Niza Adnan. She is a first year medical student at Agha University, and well, she passed her AKU test, AKU interview, and she is in the Agha University. So she has experience के AKU की test कैसे होती है and what is science reasoning, and she'll teach you science reasoning, whatever she used to ace her test. ठीक है, और उन्हें कौन से resources use किए थे, कौन से study methods, कौन से test solving methods use किए थे, वो सब वो आपको बताएगी. ठीक है, because science reasoning is very new. ठीक है, math reasoning तो फिर भी you guys have an idea कि क्या होता है ना, but science reasoning is just very new to you. ठीक है, because it's like very it's very unfamiliar, right? People are like not very familiar with it most of the time. So it's the you need a guide. You always need a guide for science reasoning. So Niza would guide you with that. Okay, and I think she is also an amazing teacher. Right. So this is a big deal now. The diagnostic test is basically it will help you challenge yourself. ठीक है, ये जो है एक free test है. ठीक है, जो कि प्रीमेड ने आपके लिए बनाई है. This will be available to everyone. ठीक है, आप सब ये टेस्ट जो है वो दे सकते हैं. ठीक है, everyone can give this test for free, and it will be held on 28th May. ठीक है, और ये आप सब दे सकते हैं. And what is special about this test is कि ये आपको बताएगी कि आपको कितनी साइंस और मैथ्स रीजनिंग आती है. ठीक है, it's a free test. ठीक है, this will help you assess your own प्रिपरेशन कि आप कहाँ पे पहुंचे हो, आपको कौन सी एरियाज में आपको इम्प्रूव करना है, और आपको किस जगहों पे ज्यादा फोकस देना है. ठीक है, so everyone, so we have the link to register in the description. So all of you should register for this because
कंसिडरिंग दिस इज फ्री, ये सबके लिए फ्री है, तो इसलिए आप सब इसको इसके लिए साइन अप करें, रजिस्टर करें, ठीक है, फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. सो इफ यू गाइस गो इन द डिस्क्रिप्शन, there's a link which will lead you to the registration form, और वहां पे आप रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है. एंड देन 28th मई को, which is in 2 days, 2 दिनों में ये टेस्ट होगी, ठीक है. इट विल टेल यू कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है, ओके. एंड what's big is, and drum rolls please, कि जो 3 winners होंगे, the 3 winners, they'll get free access to this course. जो top 3 lucky winners होंगे, they'll get free access to this course, जो कि जिसकी हम बात कर रहे हैं. So these 3 top winners will get free access, right, to the whole course, ठीक है. So make sure you guys do it well, ठीक है. आपको सही से करना है. It will not only help you with your preparation, but also it will not only tell you कि आप कहाँ पे हैं, but also it might even get you free access to this whole course. And what's bigger than that, right? Free access. Okay. And then the course that we're talking about, ये course के क्या features हैं, ठीक है. तो यहाँ पे we have more than 500 MCQs, ठीक है. I'll tell you what, AQ के लिए, बल्कि किसी भी टेस्ट के लिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ठीक है. सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता, क्लासेस लेने से कुछ नहीं होता. You guys need to practice. Practice is what's gonna help you assess कि आपकी कितनी तैयारी है, and whether you're like ready for the test or not, ठीक है. और आपको कहाँ पे ज्यादा पढ़ना है, किस एरियाज पे ज्यादा फोकस करना है. So MCQs practice is very important, ठीक है. And this course will provide you with more than 500 MCQs, ठीक है. And trust me, those are good ones, ठीक है. अच्छे MCQs होंगे, and you guys will basically love them, right? Love solving them. And then we also have interactive student community, जैसे कि आप लोग comments में एक दूसरे से बात करते रहते हैं during the webinars and stuff. We will provide you with an interactive student community, जिसमें आप दूसरे students जो कि आपकी तरह कोर्स में होंगे और तैयारी कर रहे होंगे, उनके साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, ठीक है. इफ यू हैव एनी डाउट्स, या फिर आप किसी से पूछना चाहते हो कि अगर उनके भी इस तरह के डाउट्स हैं, if it's like true or is it just me, right? तो उसके लिए आप जो है दूसरों से बात कर सकते हैं, आप एक दूसरे से रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे से जो है MCQs शेयर कर सकते हैं. then you guys can discuss. So discussion, आपको पता होगा कि अगर आप डिस्कस करते हैं तो like it's very helpful, ठीक है. So you guys can discuss with other students. So we'll provide you with this whole community, ठीक है. We have user friendly dashboard. So हम dashboard को visit करेंगे, ठीक है. हम देखेंगे कि dashboard जो है वो कैसा है, right? So किस तरह से navigate कर सकते हैं आप उसको. It's very easy to navigate, but we'll like go through it, ठीक है. हम ये dashboard अभी देखेंगे कि किस तरह से होता है. We'll also have doubt clearing sessions, कि जो आपके teachers हैं वो आपके साथ आपके सारे डाउट्स क्लियर करवाएंगे. उसके लिए आपके लिए अलग सेशंस होंगे कि आप अगर आपको कोई भी डाउट है throughout the course, if you have any doubts, you will have sessions, separate sessions on them, ठीक है. So आपके जो है वो उसके लिए sessions होंगे, doubt clearing. उसके अलावा we'll also have mock interview preparation. AQ के लिए the interview is very important, ठीक है. Interview जो है वो test से भी समझे ज़्यादा important है, ठीक है. Because test is sort of okay, easy to pass, but interview में there's so much competition. जो भी test pass करता है, those are like genius people, right? जो test pass करते हैं, and then all of them compete in the interview. So interview is like very important and very, it can get like very confusing because AQ का interview is very different, ठीक है. तो interview की भी preparation करवाई जाएगी within this course, like literally everything in this course. We'll have leaderboard के so we'll have weekly tests, ठीक है. और हर test में leaderboard होगा, ठीक है. और so you can always like aim to be higher and higher in your leaderboard, ठीक है.
or and that will help you, they'll give you motivation, okay? And these things, although they might seem like trivial, but they're very important, okay? They help you motivate, they help you, track down your your preparation and everything. It will like, it gives you a push. So it always gives you a push. So leaderboard जो है वो भी होगा, right? So we'll have leaderboard, we'll have progress tracker, ठीक है? जिससे आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं. it will tell you कि आपने कितने एमसीक्यूज इस हफ्ते में सॉल्व किए हैं, या फिर एक दिन में सॉल्व किए हैं, और आपके कितने सही थे. सो यू हैव होल एनालिसिस, ठीक है? पूरा एनालिसिस आएगा आपका. और उससे आपको पता चलेगा कि आपके कितने किस तरह से. सो इवन इवन द डायग्नोस्टिक टेस्ट, उसका भी पूरा एनालिसिस आपको मिलेगा, ठीक है? तो डायग्नोस्टिक टेस्ट में भी you'll have the tracker, जिसका एनालिसिस आपको मिलेगा. we'll have timed mocks, ठीक है? एक यू के लिए टाइम को मैनेज करने की स्ट्रेटेजी होना इज इम्पोर्टेंट, ठीक है? तो आपको प्रैक्टिस करना होता है कि आप जो है टाइम किस तरह, आप कितने टाइम में कितना सॉल्व कर पा रहे हैं और कितने सही कर पा रहे हैं, राइट? सो टाइम्ड मॉक्स भी आपके लिए होंगी कि आप 2 घंटे बैठकर उसी तरह सॉल्व करें जैसे कि आप टेस्ट में, एक्चुअल टेस्ट में सॉल्व करेंगे, ठीक है? और उससे आपको बिफोर हैंड आइडिया होगा कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं. अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो यू कैन लाइक ट्राई टू गेट बेटर, कि आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? एंड देन यू कैन वर्क ऑन दोज एरियाज. आप किस सब्जेक्ट में ज्यादा टाइम ले रहे हैं, किस सब्जेक्ट में कम टाइम ले रहे हैं, ठीक है? सो दीज आर इम्पोर्टेंट, लाइक आई टेल यू, दीज आर इम्पोर्टेंट. We'll have live classes, obviously, and with the amazing teachers that I introduced you all to. तो वो आपकी live classes लेंगे, ठीक है? We'll have weekly marathon. Per week we'll have a test, ठीक है? So weekly marathon. So again, tests are important, right? So हम आपको test भी देंगे, ठीक है? और जिन लोगों ने AKU की test last year पास की थी, लेकिन लेकिन उनका interview पास नहीं हुआ था, उन सबको हम 70% स्कॉलरशिप दे रहे हैं, ठीक है? सो दैट्स अ बिग डील, राइट? दैट्स अ गुड न्यूज कि 70% स्कॉलरशिप फॉर एनीवन हु पास्ड एक्यू टेस्ट लास्ट ईयर, ठीक है? हम आपको नोट्स भी देंगे, टॉपिक वाइज नोट्स देंगे, हर चैप्टर के अलग अलग नोट्स देंगे, ठीक है? हर टॉपिक के अलग अलग नोट्स विच यू कैन यूज टू प्रिपेयर फॉर योर टेस्ट. We'll have assignments with smart deadlines, ठीक है? सो असाइनमेंट्स भी होंगी जिस पे आप सो अगर आपकी क्लास हो रही है तो उस पे फोकस्ड असाइनमेंट होगी, ठीक है? सो दिस इज हाउ यू कैन आल्सो सी कि आपने कितना सीखा. एंड आपके पास हर लेक्चर की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, ठीक है? सो विल आई शो यू ऑन द डैशबोर्ड कि वहाँ पे यू हैव ऑल द टेस्ट tabs added already, और उसमें आपके हर like with every lecture वहाँ पे upload lecture or notes or test और सब कुछ upload होता रहेगा, ठीक है? Okay, so this is the course schedule. Um, This is the course schedule. Okay, 28th May ko we'll have a diagnostic test. So remember to take this test, क्योंकि ये टेस्ट में आपको पता चलेगा कि is it even worth, अगर आपको सब आता है, for example you're like getting really good score in this test, then you won't need to join any course, and I hope that happens for you guys. But I just know कि you guys would need help, right? So this diagnostic test is important, okay? Aap isko lein because it's free, right? It's not costing you anything. So please take this test. It's free, and it can provide you a chance to get enrolled in this course for free. Like top 3 winners will get 100% scholarship to the course, ठीक है? तो अगर आपको ये course attend करना है, ठीक है, and you think it's a lot of money, then try to get a rank, to one of the top 3 ranks, right? अगर आप, if you're one of the 3 people, the 3 top scoring people, आपको free course, you'll get free access to the whole course, ठीक है? So 29th May को हम आपको बताएंगे कि how many like whatever the results are, ठीक है, and whoever the winners are, ठीक है? 29th May को. उसके बाद 1st June से आपकी क्लास start होंगी, and then every week we'll have a marathon, ठीक है? Every week. So until the 5th July, हर week आपके lectures होंगे, आपके assignments होंगे and all that, and we'll have weekly marathons. And then 5th July को there will be a final mock test, ठीक है? This will again be like the diagnostic test. This final mock test will tell you कि आपने क्या सीखा, आपकी तैयारी कितनी है, ठीक है? And it's like very close to the test, ठीक है? तो तब तक आपकी तैयारी हो जानी चाहिए. And this will
this mock test will help you assess that कि आपकी हुई है कि नहीं है. And then अगर कुछ areas आपसे miss हो गई हैं, तो you can then focus on those instead of like not knowing where you are or anything. ठीक है? So this is the whole schedule that we just spent over. Okay, so now we'll talk about the dashboard. So let's just see how the dashboard looks. Let me just open. Okay, can you guys give me a second? I just need to. Okay, so this is the dashboard, and I hope everybody can see this. Um, so this is your whole dashboard, and wait, let me just. And then so right, this is the dashboard. जिसमें if you want to buy the course, तो ये आपका course है, ठीक है? So ये course में आप जाके buy कर सकते हैं. These are all the details जो कि हमने अभी बात की है, right? So this is the progress tracker, ठीक है? जिसमें आप अपनी so we'll have progress tracker जिसमें आप अपनी growth को monitor कर सकते हैं. We'll have assignments. We'll have more than 500 MCQs. We'll have leaderboard, just like we talked. We'll have doubt clearing sessions, topic wise notes, user friendly dashboard. And trust me, it is user friendly, although like it's hard for me to navigate, but it is user friendly. We have live classes, we have 24/7 recordings, and timed mocks and weekly marathon. Okay? These are your teachers, and frequent, so you can visit the dashboard and look at the frequently asked questions if you have any doubts. Okay, or you can ask me any questions. Okay, so the dashboard, so dashboard में आपके लिए MCQs हैं, ठीक है? We have quiz builder. So this is a new feature, quiz builder, right? जिसमें आप uh, particular topics का particular number of MCQs का quiz बना सकते हैं. Then you can
सॉल्व दैट, ठीक है। अगर आपने फॉर एग्जांपल एक हफ्ते में 2-3 टॉपिक्स पढ़े हैं तो उन 2-3 टॉपिक्स का क्विज बना दें, एंड देन आप चाहते हैं कि अ, एक थोड़ा सा लो यील्ड टॉपिक है तो उसके आप कम एमसीक्यूज इंक्लूड कर सकते हैं कंपेयर टू अदर टॉपिक जिसका आप ज्यादा एमसीक्यूज इंक्लूड कर सकते हैं, राइट। दिस इज हाउ यू कैन लाइक कस्टमाइज योर क्विज, फिर आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। वी हैव ऑल द रिसोर्सेज, वी हैव नोट्स, गाइड्स एंड more. We have so your recent activity, we have the saved questions option, saved facts and everything, and the leaderboard again. So we have leaderboard, we have the flashcards. So यहाँ पे you'll get all the notifications, ठीक है। जो भी notifications आएंगे वो आपको यहाँ पे show किए जाएंगे, एंड यहाँ पे आपके सारे statistics होंगे, ठीक है, कि आपने कितने डेक्स अटेम्प्ट किए, एंड देन कितने टेस्ट अटेम्प्ट किए। सो दिस इज लाइक योर प्रोग्रेस ट्रैकर, राइट। कि तो आप अपनी बेसिकली इन सब फीचर्स के साथ आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक। सो दिस इज जस्ट टू मेक इट ऑल एफिशिएंट एंड कन्वीनियंट फॉर यू, ठीक है। एवरीथिंग इन वन वेबसाइट, ठीक है। सो फ्लैश कार्ड्स, vault courses, right? So all of that. So does everybody now understand के कैसे navigate करना है आपके dashboard को, how to navigate the whole website? If yes, then please write something in the comments. All right. Okay. So so let's make it happen. The power of support. So the support that you'll get here would be very, you know, useful. Throughout your preparation. I know it gets like very hard. जब आप तैयारी कर रहे हो, like you have no interaction with other people who are going through the same thing, जो same चीज पे गुजर रहे होते हैं. So the student community, the teachers, they'll all help you through all of this, ठीक है. um, अगर आपको कुछ नहीं आ रहा तो you'll have immediate access to someone who will clear your doubts, ठीक है. immediate access, आप अपने ग्रुप में क्वेश्चन भेज सकते हैं जो कि आपके स्टूडेंट के साथ होगा. You can contact your teachers, you can ask them questions in class. So you'll have all the things available at your fingertips, ठीक है. Your website will help you track your progress, और आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे पहुंचे हैं, ठीक है. This course is honestly super helpful, ठीक है. बहुत ज़्यादा helpful होगा आपके लिए if you attend this, especially अगर आपको science reasoning और maths reasoning के बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है. अगर आपको नहीं पता तो please, I know like a lot of people who apply to AQ from the interior side, because I'm from interior myself, and a lot of people who are from interior have no clue what AQ test is like, ठीक है. So science का portion तो is more or less what MDCAT is, ठीक है. वो similar ही हो सकता है बहुत, लेकिन the reasoning वाला portion is just so ambiguous and so unfamiliar to all of us कि जब तक आप टेस्ट ना दो, you just don't understand वो क्या होता है, ठीक है. उसमें क्या आता है, साइंस और मैथ्स रीजनिंग में पढ़ना क्या होता है, like they never tell you what to study in science and maths reasoning. तो फिर जो स्टूडेंट्स जिन्होंने खुद टेस्ट दी है, ठीक है, the people who have already given and aced the test, जो अभी एक ही में पढ़ रहे हैं, those students will guide you, ठीक है. वो आपकी हेल्प करेंगे throughout this course. आपको पढ़ाएंगे, आपको समझाएंगे. अगर आपको लगता है कि इफ यू थिंक कि आपको कुछ नहीं पता इसके बारे में, ठीक है, they'll tell you कि किस तरह के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करने हैं, ठीक है. सो क्वेश्चन बैंक इज वेरी यूजफुल ऑब्वियसली, तो आप यू कैन जॉइन ऑल ऑफ दैट, ठीक है. एंड देन इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज लेट मी नो, please let me know if you have any questions.
If there are no questions, then we'll have to end it. But that's good, right? So the course is amazing, right? I know the teachers. I've talked to them myself. They're my So the test, the time, I think they'll share the time with you. ठीक है? Proper time बता देंगे, but it's on 28th May. It'll probably happen the whole day कि वो पूरा दिन on रहेगी, and then you can attend as you like. आप जब भी इसको चाहे attend कर सकते हैं. And then one day later, on 29th May, will announce the results. The three winners, ठीक है, will get 100% scholarship. ठीक है, and the people who have already given the AKU test last year and passed it, they'll get 70% scholarship. ठीक है, so I don't know where it went, but yeah, so people who already passed AKU test last year will get 70% scholarship. So if you're someone who already has passed the test last year but um, couldn't go through the interview process successfully, can apply for this scholarship or won't मिल जाएगी 70%, right? So this is huge, guys. This is like huge. So I think you guys should apply for this. Like I'm in AQ now, right? So I have to apply for this. It's fine. It's fine if you're freshers. Um, you can get the 100% scholarship, right? आपको 100% scholarship भी मिल सकती है if you are one of the winners. So try to win, I think, and that will get you 100% scholarship. Right. So life at AQU is good. Honestly, AQU में you get more than just study, right? AQU में there is university life. There are a lot of things happening like every day. ठीक है, बहुत सारी चीजें. You have like this whole sports center, literally a separate building for that, right? So that's good, because like medicine is very stressful. ठीक है, and AQU not just like makes you study, but also gives you these relievers to get their student societies and everything. So those are fun, right? So AQ is fun, basically. No, okay. So final test तो फिर final होगी ना, उसके बाद तो scholarship नहीं है, right? So the diagnostic test that will help us decide जो winners हैं, ठीक है? So हम जो आपकी diagnostic test होगी, उसके जो winners होंगे, वो decide करेंगे. उससे sorry, उससे will decide who gets the scholarship, ठीक है? So if there's no more questions, please let me know if there are any more questions.
Okay, so we told you अगर आप ये course join कर, so how to prepare is, so this course is one of the ways आप तैयारी कर सकते हैं ना. ये पूरा course, the course we talked about, the diagnostic test will help you help you assess कि आपको कितनी तैयारी चाहिए, and then the course will help you do the तैयारी. ठीक है, तो आप उस course से ठीक है तैयारी कर सकते हैं. The final test is for you कि आपको पता चले कि आपने कोर्स में क्या सीखा और फिर आपकी क्या कैसी तैयारी एंड एवरीथिंग. ठीक है, तो that's what the final test is for, which is on 28th in 2 days. Okay, any more questions please? So AQ स्कॉलरशिप जो है वो आप जब आप जब आपकी एक्सेप्टेंस आ जाती है, ठीक है, AQ की टेस्ट के होने के बाद, फिर इंटरव्यू के होने के बाद, जब आपकी एक्सेप्टेंस आती है, फाइनल एक्सेप्टेंस, तब वो ईमेल भेजते हैं जिसमें लिंक होती है, जिस लिंक से आप अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, सो तब दिस इज फॉर लेटर. सो स्कॉलरशिप के लिए आपको अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट्स लाइक अ लॉट लेटर. आपकी जो टेस्ट है, इंटरव्यू है, उसके भी बाद जब कोई एक्सेप्टेंस आ जाएगी, ओनली देन. ठीक है, बिकॉज वो बहुत लंबा प्रोसेस होता है. इट्स लाइक अ ह्यूज फॉर्म जो आपको फिल करना होता है. ठीक है, और वो फिर आप तभी करते हो जब आपको पता हो कि आप जा रहे हो ना, कि लाइक यू आर एक्चुअली एक्सेप्टेड. तो वो बहुत दूर की बात है, लाइक इन नवंबर और सो. प्लीज डोंट वरी अबाउट टेस्ट पे ध्यान दें एंड ace the test first. ठीक है, so total marks आपको पता है 100 होते हैं, half of which are for science. जो 50 आपकी science होगी और 50 आपकी reasoning होगी. So the reasoning portion is maths and science reasoning. Diagnostic test का paper, but I think it will be. Oh wait, what pattern are you asking? Is it like diagnostic test or the AQ test? Yeah, so this is free to everyone. ठीक है, are you talking about AQ test or diagnostic test? The diagnostic test is free to everyone. ठीक है, वो सब attend कर सकते हैं. If you want to know कि आपको first year में कितना आता है, then sure go ahead, आप attend कर सकते हो. The AQ test, however, वो आपको you can only attend it after you've given your 12th examination. ठीक है, 12th के आप boards देने के बाद I think you can sign up for register for AQ test. ठीक है, so yeah. So are there any more questions? All right, perfect. Yes, diagnostic test is free. ठीक है, तो diagnostic test is free for everyone. अब अगर आपको आता है, आपको नहीं आता, आप फर्स्ट ईयर में हो, आप इंटर में हो, आप रिपीटर हो, जो भी, इट्स फ्री फॉर यू. ठीक है, तो आपको देनी है तो आप दे सकते हो. ठीक है, आपको सिर्फ साइन अप करना है यूजिंग द रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. ठीक है, इट्स फ्री फॉर एवरीवन एंड फॉर इट्स फॉर एवरीवन एंड इट्स फ्री. ठीक है, so you can access it. Everyone can do this. Yes, everyone can give. हर कोई दे सकता है. आमना, everybody, हर कोई दे सकता है. It's free of cost. Okay, is it clear? कि the test is free and it's for everyone. आप दे सकते हो if you want.
जो लिंक दिए हुई है ना आपको डिस्क्रिप्शन में, उससे प्लीज साइन अप, वो आप फॉर्म फिल करें एंड यू कैन गिव द टेस्ट.